Dear student, take in practical question number 2 for preparation of company's balance sheet as per schedule 3 part of the Companies Act 2013. Now, balance sheet of Tractors India Limited as per schedule 3 part 1 of Companies Act 2013. Now, balance sheet format. Particulars, note to account, and current year in rupees. Now, first, as equity and liabilities, shareholder fund. In a shareholder fund, A as a share capital, B reserve and surplus. Now, share capital working note 1 as a note to account, first share capital. Question information. Tractor India Limited is registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity share of 10 each. The company issued 50,000 equity share at a premium of rupees 5 per share. 2 per share were payable with application and 8 per share including premium on allotment, and the balance amount on first and final call. According to this information, share capital, kind of capital first as authorized capital, 1 lakh equity share, at the rate of rupees 10 each, amount rupees, outer column 10 lakh. Next, issued capital, company issued 50,000 equity share. Now 50,000 equity share at the rate of rupees 10 each, amount rupees 5 lakh. Authorized capital and issued capital, both amount are not considered in balance sheet. Subscribed capital, next,
in a subscribed capital. In a question information issued 50,000 share. Any information not given. How many shares were subscribed? Now subscribed, issued and fully subscribed. Now subscribed for 50,000 share in a subscribed capital. Two category: subscribed and fully paid up share. In a question, the issue was fully subscribed and all the amount due was received except the first and final call money on 500 शेयर. तो टोटल कंपनी ने शेयर इशूड किए थे 50,000 जो कि पूरा सब्सक्राइब्ड है. उस 50,000 शेयर में से 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया. तो 50,000 शेयर होल्डर में से 500 माइनस करेंगे. 49,500 शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आएंगे. तो 49,000 शेयर at the rate of rupees 10 each, amount rupees 4,95,000. Next, subscribed but not fully paid up. Next category, subscribed but not fully paid up. 500 share at the rate of rupees 10 each. Inner column 5,000 less call in arrear. 500 share did not pay the first and final call money. Now let's कॉल इन एरियर ऑन 500 शेयर. अमाउंट रुपीज़. तो ये अमाउंट कैलकुलेट करें. तो हमें पता है कि एक शेयर है जो कि शेयर की फेस वैल्यू ₹10 इशूड एट ₹5 प्रीमियम. नाउ 10 प्लस ₹5 प्रीमियम. टोटल रिसीव्ड अमाउंट 15 है, जिसमें से अप्लीकेशन ₹2, allotment ₹8 including premium 3 plus ₹5 premium. First and final call बैलेंस अमाउंट. तो टोटल 15 में से हमने ₹10 ₹5 हमारा फाइनल कॉल है. तो कॉल इन एरियर 500 शेयर होल्डर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. Now 500 shares से ₹5 as a call in arrear 2,500. Amount ₹2,500 जो रिसीव्ड है वो एज ए कैपिटल पार्ट है. टोटल वैल्यू 4,97,500 which are showed in share capital value 4,97,500. Next, reserve and surplus. Working note 2. Note to account. Second, reserve and surplus. तो टोटल पब्लिक के पास 50,000 शेयर है, जिसमें से 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, यानी कि इन 500 शेयर से ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है. तो रिजर्व एंड सरप्लस एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 शेयर at the rate of ₹5 premium per share. Amount
2,50,000. Now reserve and surplus value 2,50,000. Now question number 2 complete. Next practical question number 3. Nupur Limited was registered with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh equity share of rupees 10 each. The company offered 1,50,000 equity share for subscription to public and application were received 1,40,000 इक्विटी शेयर. तो पब्लिकली इशूड हुआ है 1,50,000 जिसमें से सब्सक्राइब शेयर है 1,40,000. दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन. द डायरेक्टर्स कॉल्ड ₹7 पर शेयर. तो एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 7 रुपीज़ कॉल्ड अप किया. तो इसे हम कहेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में दो कैटेगरी है, या तो कंपनी ने नहीं मांगा या शेयर होल्डर ने पे नहीं किया. तो ऊपर वाले क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया, इसमें कंपनी ने तो मांगा था लेकिन एक शेयर होल्डर 500 ऐसे थे जिन्होंने अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया. तो इनको भी हमने किस में रखा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में. लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में ऑल शेयर जो हैं उनसे हमने 7 रुपीज़ ही कॉल्ड अप किया नॉमिनल वैल्यू का. इस वजह से ऑल शेयर कंसीडर करेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. बैलेंस शीट ऑफ नूपुर लिमिटेड as per schedule 3 part 1 of the Companies Act 2013. First as a particulars, next note to account, and current year, equity and liabilities. Shareholder fund, A. Share capital, and B. Reserve and surplus. Working note 1 for share capital. Now note to account. First, share capital. Now so kind of capital, authorized capital, in a question information, authorized capital rupees 20 lakh divided into 2 lakh equity share of rupees 10 each. Now 2 lakh equity share at the rate of rupees 10 each, amount 20 lakh. Next, issued capital, total 2 lakh share, out of which 1,50,000 equity share
issued for subscription. Now issued capital 1,50,000 equity share at the rate of rupees 10 each. Amount 15 lakh. Next, subscribed capital only 1,40,000 share were subscribed and directors called only 7 rupees per share. Now in a subscribed capital, subscribed but not fully paid up. Fully paid capital 1,40,000 equity share at the rate of rupees 7 called up, value rupees 9,80,000. Now share capital value rupees 9,80,000 show in balance sheet.